Hello champions, welcome to the next lecture on the Legendre polynomial. Today we will discuss the various properties and its very short proof of its Legendre polynomial. Myself Dr. Harish, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the playlist of the ordinary differential equation. You can see the previous lecture related to the Legendre polynomials, Bessel Frobenius methods, power series solution and many more lecture available in this playlist. So as we have discussed the first 5 lectures related to the Legendre equations, today I will cover the lecture number 6. बच्चों जब हम लेक्चर नंबर 11th पे पहुंचेंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द CSR नेट 15 सेकेंड शॉर्टकट ट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द Legendre, जनरेटिंग फंक्शन, ये सब आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा टू गेट द आंसर इन द 15 सेकेंड टाइम पीरियड्स. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे पहले 10 लेक्चर हमेशा सुनिए and then you can get the CSR net problems in a simple manner. You can subscribe my YouTube channel so that whenever I will upload the next video, you will get the notifications. So how we can compute P0, P1, P2 and then so on, where Pnx is called as a Legendre polynomial. So we have discussed the 3 different methods. The first one is based on the solution of the Legendre polynomial of the first kind. Second method is we can find the value of the P0, P1 by using Rogers formula, and the third one is with the help of the generating functions. I always recommended we can use either as a generating formula or as the Rogers formula. Now today our target is how we can prove or how we can derive these various properties of the Legendre polynomial. बिलीव मी, हर एक प्रॉपर्टी हम 2 लाइन्स के अंदर कंप्लीट कर देंगे. फाइन, सो यू मस्ट वॉच इट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड द वीडियो इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो. द फर्स्ट प्रॉपर्टी, P of n is 1 for all n, P of n of -1 is -1 power n and then so on. Fine, so let's start with the generating formula of the Legendre polynomial. This is a generating formula. फर्स्ट पार्ट के लिए बात करते हैं. Fine, your target is to find the P of n at the 1. So इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी आपके पास. So I can substitute x is equal to 1. तो कितना आंसर होगा लेफ्ट हैंड साइड में 1 minus of 2t plus t square raised to power minus half, which is equal to summation P of n 1 and t square t raised to power n. ये लेफ्ट साइड क्या बन गया आपका 1 minus t of whole square. Fine, it is a minus of half, which is summation of P of n1 into t की power n. Now clearly say square and minus of half cancel. That implies 1 minus t raised to power minus 1. I can expand the series. What is the series of the 1 minus t की power minus 1? It's a 1 plus t square plus t cube plus t4 and so on. So that will give you summation Pn of 1 into t की power n. Now can you equate the coefficient of t की power n? What will happen? The right hand side is p of n is 1. The left hand side is coefficient of the t की power n is always 1, and that will give you the first proof of the property number 1. How you can prove the property number 2? Now clearly say in this case x will be my -1. I can substitute instead of the 1, I can take x is equal to -1. So that comes to be plus 2t plus t square. तो ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज 1 plus t of whole square raised to power minus half. So that will give you 1 plus t raised to power -1 into is equal to summation P of n is -1 t की power n. I can expand the series of 1 plus t raised to power -1. Then again you can equate the coefficient of t की power n. The right hand side is P of n is -1. The left hand side is a plus minus. I can write into 1. So clearly say P of n of -1 is -1 raised to power n. Third property,
you can see our target is to find the p of n minus x. So I can replace, or I can put x is equal to minus x in equation number 1. Fine. Or you can replace x to be minus of x. Moreover, on the right hand side we need minus 1 raised to power n. तो minus 1 की power n कब आएगी? If you take t to be minus of t. Fine. So I can replace t by minus of t. तो आपका एक्सप्रेशन क्या बन गया? 1 plus 2xt. Now it's a t square, so minus of t square is again the plus of t square, and the right hand side becomes summation p of nx minus of t raised to power n. Now clearly say, find minus 1 ki power n. So now if I consider this is my equation number 2, that is my equation number 3. So what will happen from equation number 2 and equation number 3? क्या हो गया? Left hand side are same, so right hand side are also equal. Equate the coefficient of the t raised to power n on the both side. So you will get p की power, p of n is minus x, which is equal to minus 1 raised to power n of p and x. And that's the proof of the property number 3. Look at the next property. Proof that p of n prime. What is the meaning of the pn of prime is? You have to find the derivative with respect to n. Fine. So again a very simple, because we know the p of n is the solution of the Legendre equation. तो अगर ये इसका solution है, I can substitute the value. इसको satisfied करेगा ना आपके पास? p of n double prime minus 2x p of n prime plus n into n minus 1 of p n x. चलिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं. योर टारगेट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू एट द 1. तो सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. तो व्हाट विल हैपन? ये वैल्यू आपके पास क्या होगी? 0. देन इट विल बी माइनस 2 पी एन प्राइम 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 ऑफ पी एन 1 इज इक्वल टू 0. एंड वी नो what is the value of the p of n is 1 is 1 for all n. ये मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूफ करा है. आई कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू. यू विल गेट माइनस प्लस n plus 1 is equal to 0. Therefore pn prime is my n into n plus 1 over 2 is the required first property of the solution of the pn prime 1. Similarly for the second case, I can substitute. क्या सब्सटीट्यूशन करें इस इक्वेशन में? माइनस 1. सो आई कैन सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू माइनस 1. तो आप अगेन दैट वैल्यू विल बी 0. दिस क्वांटिटी विल बी 2 pn prime of minus 1 plus n plus 1 of pn minus 1. By using the property, what is the p of n minus 1? It's minus 1 raised to power n. यहाँ पे इसकी वैल्यू फिल कर दो, माइनस 1 की पावर n. उसको राइट साइड पे ले जाओ. यू विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द रिजल्ट. लुक एट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. p of 2n plus 1 0 is 0. Or what is the meaning of that? 2n plus 1 is my odd number and 2m is my even number. So I can also write that p of odd is always 0 and p of n, when n is even, it comes to be expression. Again the proof is very simple. We can start from the generating function. Your target is to find the value at x is equal to 0. Fine. So if I substitute x is equal to 0 in equation number 1, so what will happen? 1 plus t square of minus half, which is equal to summation pn of 0 t की power n. I can expand the binomial series. What is the binomial series of 1 plus x की power n? That comes to be 1 plus ncx plus nc2x square and so on. So that comes to be 1 plus nx n minus 1 over 2 x square and then so on.
So in this case, my x will be t square. Fine. I can take x is my t square and n is my minus half. यही आएगा ना, n is my minus half. तो ये क्या बन गया आपकी एक्सप्रेशन? Your expression becomes 1 minus half of t square plus minus half minus 3 by 2 over 2 factorial into t square of square plus so. तो जैसे आप फिल करोगे you will get the expression of this quantity. इसको ओपन कर लेते हैं. 1 minus t square by 2 minus minus plus 3 2 to या 4 4 to या 8 t की पावर 4 plus minus minus 15 8 into 6 t की पावर 6 and then so. Clear? Now you can equate the coefficient of t की पावर n. अब आप राइट साइड पे देखो, यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर, T4, T6. तो इसका मतलब राइट हैंड साइड इज कंसिस्ट ऑफ ओनली इवन पावर ऑफ द टी. तो इसका क्या मतलब हो गया? जैसी आपका ओड पावर होगी तो वो क्या आंसर आएगा? 0, बिकॉज इसके अंदर टी क्यूब का कॉफिशिएंट ही नहीं है. सिमिलरली टी की पावर 5 का कॉफिशिएंट ही नहीं है. सो दैट मीन्स वेन एवर यू कैन कंप्यूट एन इज माई ओड, दैट विल बी 0. और यू कैन से 2m plus 1 of 0 is my 0. Clear? Now you can, for the whenever n is odd, अगर n even होगा then you can equate the coefficient of t की पावर n. Left hand side is p of n 0. अब आप इसको लिखना कैसे? देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. फाइन. अब आप देखो नहीं 2 पे नेगेटिव है ना, तो इसको मैं -1 ले लेता हूँ. अब आप देखो यहाँ पे पावर 6 है, तो यहाँ तक कहाँ तक लिख रहे हो? 5 तक. इसका मतलब 1 ओ टर्म्स लिख रहे हैं 1 3 5. तो अगर मैं इवन ले रहा हूँ सो दैट विल बी n-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 6 है तो 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 3. तो ये मतलब 6 4 का हाफ 6 का हाफ. सो आई कैन राइट एज ए 2 की पावर n/2 फैक्टोरियल इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. फाइन. और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. 1 3 5 इसमें 2 4 6 से लेके n तक मिसिंग है. फाइन. इसी से मैं मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड कर देता हूं. तो ये आपका ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन गया? -1 की पावर. ये एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका? यस एनीबडी? 1 2 3 4 5 6 अप टू द n फैक्टोरियल. सो इट्स माय 2 की पावर n/2 फैक्टोरियल. इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो 2 की पावर कितनी कॉमन निकल जाएगी? n/2, बिकॉज एक एक टर्म मिसिंग है ना. तो अंदर क्या रह गया? 1 2 3. तो लास्ट टर्म क्या रह जाएगी? n/2. तो आपका क्या बन गया? 2 की पावर n/2 2 की पावर n/2. तो ये आपके पास क्या हो गया? 2 की पावर n. फाइन. और ये किसका फैक्टोरियल हो जाएगा? n/2 का फैक्टोरियल. फाइन. और एक n/2 पहले भी बाहर लिखा हुआ है, सो दैट विल कम्स टू बी स्केल. क्लियर? और इफ यू टेक n इज इवन, आई कैन राइट n इज इक्वल टू 2m. तो अगर n की वैल्यू m इज इक्वल टू 2n. फाइन. सो यू कैन सब्सटीट्यूट n इज इक्वल टू 2m. तो यहाँ पे n की वैल्यू 2m फिल करोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द लीजेंडर पॉलिनोमियल. इज इट फाइन? Now we will see the next one is the orthogonal property of the Legendre polynomial. That means what will happen if you integrate from -1 to 1 Pnx Pmx. Fine. So we will see the next lecture very soon. Till then you can share this video, like and comment on it. Thanks for the watching. Happy learning always.